Virgorian again with a new video. This is the part 2 video on could my symptoms be COVID-19. So let's go further with that. In this video I am going to tell you about the most rare or less common symptoms of COVID-19. So let's get started. So the symptoms we are going to talk about are most rare, or we can say less common symptoms of COVID-19. Talking about the first symptom is dizziness or impaired thinking or eye discomfort. Going further with the first symptom, mild symptoms include dizziness and feeling lightheaded. That means guys थोड़ा आँख में एकदम dizziness, haziness का problem होना, एकदम ठीक ठाक नहीं दिखना, blur दिखना. Now talking about the symptoms which need urgent care includes confusion, inability to wake, uncoordinated movements or feeling like strokes, signs of facial dropping, numbness and garbled speech. That means guys आपको एकदम कुछ symptoms का एकदम urgent care करना चाहिए. वो है एक तो अगर आप बहुत confusion feel कर रहे हैं first, और second अगर आप बहुत ही एकदम उठने में आपको problem हो रहा है, आपके words एकदम tongue twist हो जा रहे हैं, जैसे आप कुछ ठीक ठाक बोल नहीं पा रहे हैं, आपके body parts का ठीक ठाक movement नहीं हो रहा है, you are feeling very discomfortableness in your own self, then those are the symptoms that you need to take care as soon as possible for your health. Symptoms like including eye pain, itching, tearing and redness of the eye can come up to 25% of patients. That means guys 25% के patients में ये देखा गया है कि उनके आँख में जो problem हो रहा है, उनके आँख में जैसे कि कुछ जैसे बहुत itching का problem हो रहा है, बहुत खुजली का problem हो रहा है, और उनके आँख बहुत लाल हो जा रहे हैं जल्दी. So ये कुछ symptoms है. Going about the second symptom which is sore throat. Guys, sore throat का मतलब है गले में खराश होना. Now we move to the third symptom which is shortness of breath at rest. That means guys सांस लेने में तकलीफ होना even when you are not doing any work, you are just sitting around and or just feeling relaxed, even though at those times you can feel somewhat of shortness of breath. Now guys, talking briefly about the shortness of breath at rest, some patients develop COVID pneumonia as the virus directly attacks their lungs, and sometimes oxygen levels drop so slowly that the patients doesn't even notice, they are not even sensible about that thing. So it might faint them. Short rapid breathing or severe shortness of breath are the particularly some of the symptoms which are needed to take care under perfect medical appearance and are urgently needed medical attention. Now guys, talking about the fourth symptom which is chest pain, palpitations, and that means guys if we move forward with this symptom, chest pain, palpitation and heart problems are the rare ones. Symptoms are the rare symptoms. Those are less common symptoms in the COVID-19 patients, but they are life-threatening. I mean, of course, the sneezing, coughing, those are the very common symptoms, but those can be treated many a times, and those can be treated very easily. But if you are suffering from any of the heart problems, you may have strokes, and those are obviously once may occur and can be, if you can treat that thing, if you can treat that symptom, if you can treat that problem in a right way, then you may suffer a lot and it may cause and death. So please take care of any of your chest pain, palpitation or heart problems. If you are a heart patient, so keep yourself away from all the outdoors, keep yourself isolated mainly, because that is life-threatening. Chest pain, palpitations are mainly caused by inflammation or low blood pressure or declining oxygen. That means guys ये chest pain, heart problems, palpitations तभी हो सकते हैं जब किसी patient का, किसी इंसान का low blood pressure होता है, या फिर declining oxygen. That means उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, so he can't breathe in a good way. Hospitalized patients may have kidney problems which may cause leg swelling and bloody urine. Now talking about the fifth symptom which is rashes, that means guys an immune response may cause rashes on the body as the virus shows up in many several ways across all over your body. So it may develop some strange rashes, some smooth, bumpy, itchy and inquious rashes around all over your body. So be careful with that, very careful. Now we move to the sixth symptom, blisters on toes and fingers and
severe muscle pains and joint pains. In rare cases, we can see the virus directly attacks, it inflames on the joints, that means it damages the muscles of your thighs, shoulders and back, which may cause severe pain. Now we go to our last symptom on the list, which is blood clots, that means blood clotting. So guys, blood clots may cause severe pain and red lesions on fingers and toes, that means आपके fingers के ऊपर guys एकदम आपके fingers के ऊपर toes के ऊपर एकदम रेड कलर के एकदम rashes types निकल जाएंगे, जो कि बहुत ही painful होंगे, those kind of blood clotting. And as we move further with blood clotting, the virus also appears to attach to the insides of blood vessels, and that may cause very life threatening, because if those blood clots may travel into your lungs, into your brain and into your heart, then you might feel severe pain. It may affect very badly to most of the organs of your body, and that person may lose his or her life. Rare cases, the clots may cut off the blood flow in the limbs, which may require amputation. That means guys, बहुत से rare cases, बहुत से कम cases में ये notice किया गया है कि ये जो clots हो रहे हैं, ये clots आपके हाथ पैरों में जो limbs होते हैं, हाथ पैर, उनमें जो blood flow होते हैं उनको cut off कर सकता है वो blood flow को, जिसके वजह से आपको एक ऑपरेशन, दैट मीन्स आपके लिम्स को, दैट मीन्स आपके हाथ या फिर पैर को काट के अलग करना पड़ सकता है. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. Now guys, patients very sick enough to visit the hospitals may have a treatment right in their home by doing blood thinning medications for prevention of the blood clotting, or directly treating the blood clots. If you are treating the blood clots directly in your home, in your house, then you should have a good medical experience, or in your family there must be any medical professional person. इसका मतलब है guys, बहुत से patients जो एकदम hospital जा नहीं सकते, जो बहुत बीमार है, बहुत सिक है, उनके लिए गाइस वो घर में बैठे ही ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस कर सकते हैं, जो कि उनके ब्लड क्लॉट्स को बहुत ही इम्प्रूव कर सकता है, बहुत ही ठीक कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है. और अगर वो लोग डायरेक्टली अगर ब्लड क्लॉट्स को ट्रीट करते हैं राइट इन द होम, तो फिर उनको गाइस उनके फैमिली में कोई एकदम मेडिकल प्रोफेशनल का होना चाहिए, या फिर उनको जो पेशेंट है उनको कोई मेडिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइस, बिकॉज दोज आर वेरी लाइट थ्रेटनिंग. They occur very rare, but if they occur, they may take life. COVID-19 typically is mild in children and old aged persons. In very rare cases, we can see some inflammatory response in case of children. Seek emergency care if your children or any of your old aged persons in your family show these important symptoms, these warning symptoms that may concern you. So talking about the symptoms in children, so the first symptom is prolonged fever of having 5+ days and feeling lethargy, irritability और confusion. इसका मतलब है गाइस, छोटे बच्चों में अगर आपको 5+ या फिर 5 दिन से ज़्यादा अगर उनके अंदर बुखार नोटिस करते हैं, बहुत इरिटेटेड फील करते हैं, बहुत एलर्जेटिक फील करते हैं और बहुत कन्फ्यूजन्स फील करते हैं वो बच्चे, तो फिर उनको गाइस मेडिकल केयर की ज़रूरत है, उनको एकदम मेडिकल अपीयरेंस की ज़रूरत है, एक सही मेडिकल अपीयरेंस की. द सेकेंड सिम्टम इज़ टू सिक टू ईट और ड्रिंक, मतलब वो लोग एकदम खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, कुछ ना पानी पी पा रहे हैं ना कुछ खा पा रहे हैं, टू फिल द स्टमक. सो अगर ऐसा भी होता है सो उनका एकदम केयर, एक मेडिकल केयर की ज़रूरत है. सिम्टम इज़ पेल, पैची और ब्लू स्किन इन चिल्ड्रन विथ लाइट स्किन. दैट मीन्स गाइस, कुछ बच्चों के अगर तबीयत ख़राब होने के वजह से उनके स्किन के कलर्स, उनका स्किन एकदम डल और सूखा पड़ा जा रहा है, तो फिर दे माइट बी अफेक्टेड विद COVID-19 सिम्टम्स, एज बिकॉज दे आर चिल्ड्रन, दे हैव वेरी लो इम्यून सिस्टम. द फोर्थ सिम्टम इज़ ट्रबल ब्रीथिंग और रैपिड ब्रीथ. गाइस, उनके सांस लेने में प्रॉब्लम होना, बहुत ही स्पीड में वो लोग ब्रीथ कर रहे हैं, बहुत ही स्पीड में वो लोग सांस ले रहे हैं, जैसे कि शॉर्ट और रैपिड ब्रीथ्स बोला था कुछ देर पहले, एकदम वैसे ही. तो अगर वैसे फेस कर रहे हैं तो फिर उनको दे माइट बी अफेक्टेड विद इट. द फिफ्थ सिम्टम इज़ रेसिंग हार्ट बीट्स और चेस्ट पेन. दैट मीन्स गाइस, आपके हार्ट बीट, मतलब उन बच्चों के हार्ट बीट्स एकदम बहुत स्पीड में हो रहे हैं, बहुत रैपिडली बीट कर रहे हैं उनके हार्ट बीट्स, और या फिर उनके बच्चों के सीने में दर्द हो रहा है. इट माइट बी सम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था, अगर उनके इंटेस्टाइन्स में, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर उनके सर दर्द, सीने में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सब भी होता है. तो फिर उनका एकदम हर
हर तरफ से उनका केयर लेने की कोशिश कीजिए. Talking about the sixth symptom, which is severe abdominal pain and some vomiting, feeling some kind of diarrhea. ये symptoms guys मैंने एकदम part 1 के वीडियो में बोला था, which are very common symptoms and very most common symptoms. So ये भी अगर आपका बच्चा फील कर रहा है then you should take it very seriously. The seventh symptom is decreased urination. That means उनके यूरिन करने में, उनके टॉयलेट करने में प्रॉब्लम होना, उनका टॉयलेट अमाउंट, उनका टॉयलेट करने का एकदम कैपेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाना, बहुत कम यूरिन होना, ये भी कुछ सिम्टम्स हैं गाइस. So guys, if you have any of the symptoms taking from my part 1 to part 2 video and which you feel it might be a COVID-19 symptom, then doctors say that you should first isolate until you are being tested. And doctors also say that most patients also recover on their own within a few weeks. There is no need to worry and get panic. You can be recovered from right your home. Just be isolated and do not have any outdoor contacts with anyone. Just be isolated and treat yourself as per the medications or as per the preventions I have told you, and you will be good, you will be fine. Do not get panic, and peace. Bye.